Hi, good evening, everyone. Today, we will go ahead and discuss the highlights of the 50th GST Council meeting. So, this recently took place, and we must know what happened in that GST Council meeting. क्या GST का किस चीज पे कितना इंटरेस्ट रेट था, ये जानना हमारे लिए बहुत ही important है, and we must be well aware of it. So, beta, first of all, try and understand that when we talk about this GST Council, this GST Council basically it is always led by the Union Finance and Corporate Affairs Minister. ठीक है? तो Union Finance Minister कौन है हमारा? Nirmala Sitharaman, right? So she's the one who headed this GST Council meeting. And in this GST Council meeting, they discussed what should be the tax on goods and services. So basically, कुछ goods and services में, on some goods and services, they have gone ahead and revised the tax rate. So they have revised the tax rate on goods and services. कुछ goods और services पे जो पहले tax rate था और जो अब tax rate है वो अलग है. तो वो कौन से goods और services हैं जिन पर ये हुआ है वो हम आज discuss करेंगे. We will go ahead and discuss those goods and services where the tax rate has been revised. Now, they basically, whenever they make these recommendations, जब भी वो कोई भी recommendation करते हैं, उसके पीछे क्या analysis होती है? कुछ इस तरीके से recommendation की जाए कि one, government के revenue पे कुछ change दिखे. Second, at the same time, depending on economy कैसे perform कर रही है, GST improve हो, trade facilitate हो. So basically the aim is to go ahead and understand how to improve the trade, कैसे हम trade को improve कर सकते हैं, how to go ahead and increase the government revenue, किन चीजों पर tax किया जाए कि government का revenue improve हो जाए, and how to go ahead and ensure that people pay the tax. So ये सारी discussion in council में होती है. Now what we go ahead and do is we will see the changes in the GST tax rate. And first of all, we will go ahead and see changes in the goods side. Say what are the changes that are taking place. We will go ahead and see those. ठीक है जी. First देखो बेटा, uncooked unfried snack pellets. तो ये कुछ goods हैं जिनके बारे में tax rate हम देख रहे हैं कि change हुआ है. So first of all, जो भी uncooked और unfried snack pellets हैं, उन पर जो tax rate है, it has been reduced to 5%. ठीक है. Then there is a medicine. This medicine is known as dinutuximab, right? So this medicine, basically, this is used. Let me just write this down. ये use कहाँ की जाती है? ये use की जाती है therapy में. For children who have neuroblastoma. ठीक है, तो इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए, न्यूरोब्लास्टोमा, इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए बच्चों में थेरेपी के लिए ये की जाती है यूज. ठीक है. सो पेशेंट्स हु हैव गॉट बेटर विद एनी कैंसर ट्रीटमेंट आल्सो, आई थिंक सो, यहाँ पे भी ये यूज होती है. सो यू हैव टू गो, आई मीन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट दिस इज this is where it is used, right? And this drug is very, very expensive, beta. So when I googled it, I found out that this drug, it costs 36 lakhs, right? When it is imported. अगर हम इंडिया के बाहर से इस ड्रग को इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, it costs 36 lakhs, right? और अब ये बोल रहा है कि जो भी हमारा IGST था, right? International GST जो भी था हमारा, we will not be going ahead and we will not be charging any GST on this disease. ठीक है. So whenever you will import it, अच्छा, what is the full form of IGST? IGST stands for Integrated Good and Service Tax. ठीक है. But इस केस में जब भी हम import करेंगे, उस पर हम कोई भी tax charge नहीं करेंगे. This is what it suggests. So this is the meaning of this. Second, medicine and food for special medical purposes. ठीक है. Again, IGST will not be charged on imported medicines which are used for treating the rare diseases. जैसे rare जो भी diseases होते हैं, they have gone ahead and recommended those diseases. So what diseases, those rare diseases are recommended by Center
of excellence for rare diseases. तो जो भी वो diseases होते हैं उन पर कुछ भी tax charge नहीं किया जाएगा. It will be exempted. There will be no tax on. That's the second thing. Third, supply of raw cotton. तो बेटा जो भी raw cotton होता है उस पर instead earlier. So if you go ahead, and I've also made this table, if you look here beta, तो raw cotton जो था earlier, there was no tax. ठीक है, पहला था अनकुक्ड पैलेट्स जो हमने पढ़ा, उस पे 18% टैक्स था, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है. They've reduced it to 5%. जो भी रेयर डिसीज या कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो भी हमारी मेडिसिन होती है उस पर देयर इज गोइंग टू बी नो टैक्स. सो दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, राइट. रॉ कॉटन पे अर्लियर इट वाज नॉट टैक्सेबल बट नाउ इट हैज बीन मेड टैक्सेबल. सो उसको उल्टा, earlier it was not taxable and now it has been made taxable क्योंकि उस पे ट्रेड है तो गवर्नमेंट कैन गो ahead and collect revenue also. Then you have intimation zari thread of yarn. तो इस पर zari thread पर 12% was being charged and now only 5% is being charged. ठीक है. So beta, what is zari thread? When I talk about zari thread, I'm not sure if you guys have seen it, but zari thread is basically a thread which is usually golden color का होता है and it is used golden या silver color का होता है and वो garments में to bring color it is being used, right? There are various types of zari threads, but we don't have to go into that detail. We just have to understand that the tax rate on zari thread has fallen from 12% to 5%. Utility vehicles में पहले भी कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है. So utility vehicles, if I just go back here and read it through, utility vehicles, entry 52B in compensation cess notification will be amended to include all utility vehicles that meet specified parameters. The ground clearance in unladen condition will be clarified. तो उस पर कोई भी टैक्स पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है. बेटा, what is a utility vehicle? A utility vehicle is basically those vehicles which go ahead and which are motorized vehicles and they are designed to do a particular task. कोई भी एक task perform करने के लिए जिनको हम use करते हैं वो utility vehicles होते हैं. So rather than just being a passenger vehicle, सिर्फ लोगों को इधर उधर लेके जाने के लिए नहीं, but उससे extra कुछ काम के लिए, जैसे small truck type जो vehicles हो गए, उससे ज्यादा काम के लिए जो यूज करे जाएं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो जाएं या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए यूज हो जाएं, तो ये जो व्हीकल्स होते हैं जिनका कोई पर्पस होता है, रादर देन जस्ट ड्राइविंग पैसेंजर व्हीकल ना होकर जिनका कोई पर्पस होता है, वो यूटिलिटी व्हीकल कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड एज यूटिलिटी व्हीकल, राइट. सो दिस इज व्हाट द यूटिलिटी व्हीकल इज अबाउट. देन बेटा नेक्स्ट थिंग दैट इट सेज इज एलडी स्लैग 18% से it has fallen to 5%. So whenever the government goes ahead and whenever the government reduces or increases taxes, but it is based on where it sees that market can improve and where it sees that market is good and it can increase the government revenue. ठीक है. तो जो हमारा LD slag होता है, this LD slag full form is basically, this is called as Linz Donawit slag. जब भी हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, whenever we do steel manufacturing, तो इससे जो सॉलिड वेस्ट निकल के प्रोड्यूस होता है उसको हम LD slag बोलते हैं. उस पर जो GST है that has been reduced. इसको डिस्पोज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और इसकी बहुत ही लिमिटेड यूटिलाइजेशन होती है. It is used in steel production, in cement production, etc. So on LD slag the GST has been reduced. ठीक है. इसी तरीके से trauma, spine and anthropy implants में as is basis पे चल रहा है and fish soluble पे from 18% it has been reduced to 5%. Now if I just go ahead and see, there are other things also, like for example pan masala and tobacco products and coconuts. So beta, again if you see, the earlier ad valorem tax rate applicable on 31st March will be notified for levy of compensation cess on this, where it is not legally required to declare the retail prices. तो जब हम बात कर रहे हैं on the
pan masala, tobacco products, on coconut, it is on as is basis. So jo earlier tha, it is still applicable and it will be notified, right? Then if I just go ahead and look, because these are all on as is basis, there is nothing that you should have been remembering. इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है, क्योंकि जो ये sectors हैं इनमें there has been no change. So if you look here, basically what you should be remembering is those sectors wherever there has been a change that has taken place. तो बेटा यहाँ पर there has been a change, यहाँ पर there has been a change, here change is there, here change is there, here change is there, here change is there, and here. जहां पे भी changes आए हैं, wherever you see a change, that is what you have to remember. Here there is no change, right? So you don't have to remember utility में no change. So you don't have to remember these. Either you don't have to remember any of these because there is no change, right? अच्छा, अगर अब हम आगे बात करें तो सर्विसेज की भी बात कर लेनी चाहिए. So first of all we talk about goods transport agencies. ठीक है, good transport agencies will not be required to file a declaration for paying GST. Earlier they were required to file a declaration, now they will not be required. Satellite launch service will be exempted from paying GST. इनको GST pay नहीं करना होगा. Service provided by directors, right? जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी प्राइवेट या पर्सनल कैपेसिटी में डायरेक्टरशिप कर रहे होते हैं, they will be taxable under RCM, but they will not, I mean, it's on as is basis, कुछ नया नहीं होगा, right? Food and beverages in cinema halls, this is what is going to be taxable as a restaurant service. तो बेटा ये बहुत ही बड़ी चीज, ये इसने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की है, और ये हाइप हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले जो फूड एंड सर्विस सिनेमा हॉल में होता था, that was taxed as it was taxed at a higher rate. ठीक है, it was taxed at the rate of cinemas. ठीक है, but now what they are saying is कि सिनेमा के रेट पे इसको टैक्स नहीं करेंगे, इसको एक रैंडम हम रेस्टोरेंट मान के टैक्स करेंगे. तो जब हम इसको रैंडम रेस्टोरेंट मान के टैक्स करते हैं, तो रेस्टोरेंट्स पे जो टैक्स रेट होता है वो सिर्फ 5% का होता है. रेस्टोरेंट इज टैक्स्ड एट 5%, राइट? एंड जबकि हम जब बात कर रहे थे पहले सिनेमा हॉल्स की, इट वाजंट ट्रीटेड एज अ रेस्टोरेंट, राइट? और क्योंकि उसको रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे, यू वर गोइंग अहेड एंड यू वर पेइंग अ हायर टैक्स ऑन इट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ, दैट इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटली जो मूवी टिकट्स हैं, movie tickets are taxed at 12%. तो अगर आप खाने को मूवी के साथ ही बुक करोगे, at the same time add on कर दोगे, you will have to pay 12%. But if this is below 100 जो मूवी टिकट्स का प्राइस था, and above 100 it was at 18%. So even on food you were about to pay 12 or 18% on the food also. But now if you purchase food separately, अगर आप फूड को मूवी के साथ एड ऑन ना करके फूड को अलग से खरीदते हो, then it will be treated like you are purchasing from a restaurant, and a restaurant will only be taxed at 5%, right? So in a way the price of food has been reduced. Okay, then beta this has again created a lot of hype. Why? Because what has been said is that now on online gaming system, casino, race courses, tax rate has been at 28%. ठीक है, tax rate बढ़ गया है, so the tax has been increased. Earlier on casino, horse racing and online game, the tax rate was 18%, but now it has been increased to 28%. So again, इस पे लोगों के बहुत ही vivid views हैं, opposite views हैं, कुछ positive में बोल रहे हैं, कुछ negative में. पॉजिटिव व्यू ये है कि this is creating a lot of hype. इसमें बहुत the new generation is just into online games, right? And this has a lot of money involved. So when money is high, the tax collection will also be high, right? So this is the positive side, that the government can collect more taxes. Government ज़्यादा tax collect कर सकती है क्योंकि बहुत लोग online gaming में involved हैं. But इसकी negative side ये रहेगी कि people may be discouraged to play games. ठीक है, people to make a future in the online gaming because they're paying 28% as GST. So many people are saying that the online gaming industry will be affected negatively
इस पे एक नेगेटिव इफेक्ट रहेगा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि the GST has been increased. Okay, so better, this is all that I wanted to discuss today. It is important that you remember these tables. एक ये टेबल याद कर लेना कि कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में GST has been increased. एक ये टेबल थोड़ा सा देख लेना, स्पेशली सिनेमास के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, so you can just go ahead and read this out. And एक ये टेबल जिसमें आपको स्पेशली रेयर मेडिसिन के बारे में जो टैक्स रेट एग्जेम्प्ट हो गया है, you should be well aware of that. Okay, thank you.